So now let's see the poetic devices that are used in the poem Tiger in the Zoo. So in this poem, while teaching you the poetic devices, I will tell you about the use of imagery, the use of figure of speech, as well as the use of rhyme scheme in this poem. So let's see the use of repetition in the poem as a poetic device. So as I told you that there is a use of repetition in the poem. So first of all, let me tell you that what is repetition. So repetition is a poetic device that is used by the poet in order to increase the intensity of the tiger's rage and his helpless silence. तो यहाँ पे पोइट ने रेपिटेशन पोएटिक डिवाइस का इसलिए यूज़ किया है ताकि वो हमें दिखा सके कि टाइगर का जो रीज़ है वो कितना ज़्यादा है और वो कितना हेल्पलेस महसूस कर रहा है. उसकी साइलेंस ही कहीं ना कहीं उसके गुस्से और उसकी हेल्पलेसनेस को दिखा रही है. तो फर्स्ट वर्ड जो आता है रिपीट होता है वो है क्वाइट. तो हम पहले स्टैंजा में देखते हैं कि पोएट ने वेलवेट क्वाइट वर्ड यूज़ किया है. वेलवेट क्वाइट क्या है? एज आई टोल्ड यू व्हाइल डूइंग द एक्सप्लेनेशन दैट क्वाइट वेलवेट पैड्स ऑफ द टाइगर रेफर्स टू हिज वॉक. ओके, यहाँ पे जो टाइगर है वो वॉक करता है लेकिन उसकी जो चलने की आवाज़ है वो हमें नहीं सुनाई पड़ती. वो बहुत शांत से चलता है, वो रन नहीं कर पा रहा है, वो केवल वॉक कर रहा है एक लिमिटेड स्पेस में, क्योंकि केस का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा नहीं है. तो यहाँ पे वेलवेट क्वाइट वर्ड रेफर करता है वेलवेट पॉज ऑफ द टाइगर को. The use of quiet rays symbolizes the anger and ferocity that is building up inside the tiger. Why? As he wants to run out into the forest and attack the deer, but the rage is quiet. उसका जो गुस्सा है वो एकदम शांत है because the tiger cannot come out in the open as he is in the cage. तो यहाँ पे जो टाइगर है वो केज में है इसलिए वो बाहर नहीं आ सकता और इसी कारण वो शांत है. वो अपने गुस्से को दबा रहा है, अपने गुस्से को सप्रेस कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है. इसी तरह हम देखते हैं लास्ट स्टैंजा में ब्रिलियंट वर्ड का 2 बार यूज़ हुआ है. तो वो क्यों यूज़ हुआ है? सो द यूज़ ऑफ ब्रिलियंट फॉर द टाइगर्स आइज एज वेल एज द स्टार ऑल्सो हैव अ मैग्निफिसेंट इफेक्ट. ये बहुत, इसका भी बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट है. क्यों? टाइगर हैज़ ड्रीम्स ऑफ बीइंग फ्री इन इट्स ब्रिलियंट आइज. एज आई टोल्ड यू दैट ब्रिलियंट वर्ड इज़ यूज फॉर द ग्लिटरिंग आइज. जो उसकी आइज है, ब्राइट आइज है, उसके लिए यूज़ किया गया है. एंड द टाइगर सीज द स्टार्स जो कि ब्रिलियंट है, जो कि शाइन कर रहे हैं विद द सेम आइज. द टाइगर स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट स्टार विद हिज ब्रिलियंट आइज थिंकिंग अबाउट हाउ ब्यूटिफुल इट्स लाइफ कुड बी इन द फॉरेस्ट. वो कहीं ना कहीं अपनी फॉरेस्ट की लाइफ को मिस कर रहा है और मिस करते हुए वो स्टार्स को देखता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द यूज ऑफ रेपिटेशन इन द पोएम. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द राइम स्कीम. सो द राइम स्कीम इज ABCB. लेट्स सी हाउ. As we can see, the last word in the first line is strips. So it will be A sound. Second is case. Case will be B. Third is quiet. That will be C because it is not rhyming to any of the previous word. And lastly, we can see the word raise, which is rhyming to case. So both of them will be B and this will A. So this will be A. Second will be B, third will be C, and raise that is fourth will again be B. तो इस तरह क्या हो गया राइम स्कीम ABCB. Let's see next device, that is imagery. So as we can see, after reading this stanza, we also can imagine an image of the tiger that is moving in the cage and he is angry, he is helpless. तो ऐसी इमेज हमारी आंखों के सामने आती है स्टैंजा को पढ़ के. तो यहाँ पे क्या हो गया? इमेजरी. इमेजरी वो डिवाइस होती है जब हम किसी पोएम को पढ़ते हैं और हमारी एनी ऑफ द 5 सेंसेस जो है वो अफेक्ट होती है. इट कैन बी आइज, इट कैन बी सेंस ऑफ स्मेल. सो देन देयर इज द यूज ऑफ इमेजरी. नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरन. When will be the use of oxymoron? When we see that two opposite word, or you can say two words
which are having opposite meaning are used together just for the effect. यहाँ पे पोएट अपने मैसेज को इंटेंसिफाई करना चाहते, तो यहाँ पे उन्होंने ऑक्सीमोरन वर्ड का यूज़ किया है, यहाँ पे क्वाइट रेज यूज़ किया है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीमोरन. नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन. So what is the personification? Personification is the poetic device where the inanimate object, the animals are used as a human being, are portrayed as a human being. So here we can see that the poet has used he pronoun for the tiger, his pronoun for the tiger. So here there is the use of the personification. Next is metaphor. What is the metaphor? When there is a comparison made between two dissimilar objects without using the word as, so, like. So as we can see, the poet has used the word velvet, and the velvet word shows the softness of the paws of the tiger. So there is no similarity between velvet and the paws of the tiger, but here the poet has made the comparison. Next is enjambment. What is enjambment? When any sentence is carried over to the next line without any use of punctuation mark. As we can see, he stalks in his vivid strips the few steps of his case. तो यहाँ पे strips के बाद कोई भी punctuation mark नहीं यूज़ किया गया है, और ये sentence next line में कैरी ओवर हो गया है, ये sentence आगे भी continue हो गया without any use of the punctuation mark. So this was the use of enjambment. Next is consonant. When the consonant sound are repeated in the singing line, then there is the use of the consonant. As we can see, stalks and strips. तो यहाँ पे सेम लाइन में हम देख रहे हैं कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहे हैं, देन देयर इज यूज ऑफ कॉन्सोनेंट्स. नेक्स्ट इज एसोनेंट्स. व्हाट इज एसोनेंट? इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉन्सोनेंट. देयर इज द यूज ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड, बट इन एसोनेंट्स there is the repetition of vowel sound. As we can see in his vivid strips, तो यहाँ पे I sound जो है वो बार बार repeat हो रहा है. So in this line there is the use of assonance. So this was about stanza 1. Now let's see stanza 2. In stanza 2 also the rhyme scheme is same. In throughout the poem the rhyme scheme will be A, B, C, B. As we can see, grass word is rhyming to the word pass. So this will be B. Shadow will be A and hole will be C. So A, B, C, B will be the rhyme scheme. Next is enjambment. As we can see that from the word sliding, the sentence ends in the word pass. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं स्लाइडिंग वर्ड से ये सेंटेंस पास तक ख़त्म हो रहा है और इसके बीच में कोई भी पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं है. तो यहाँ पे enjambment है when the sentence continue to the next line without any use of the punctuation mark. Next is alliteration. What is the alliteration? The repetition of consonant sound in the starting of the word. As we can see, plum pass. तो यहाँ पे P starting में हम देख रहे हैं, इस word के starting में P जो है वो repeat हो रहा है, pass में भी P repeat हो रहा है, तो ये क्या होता है? ये होता है alliteration. Next is imagery. As I told you in the earlier stanza, in the previous stanza, that when we read this poem, the image of the tiger comes in our mind. We can imagine the situation of the tiger. We can imagine a tiger which is, you can say, confined behind the bars, which is locked in the bars. Now let's see the next stanza, that is stanza 3rd. In stanza 3 again the rhyme scheme will be A, B, C, B. As we can see, A's word is rhyming to the word village. So this will be B and houses will be A, clause will be C. So A, B, C, B. Next is enjambment. यहाँ पे हम देख रहे हैं he वर्ड से स्टार्ट हो रहा है ये सेंटेंस और एज पे कॉमा यहाँ पे लग रहा है, लेकिन हाउसेस के बाद कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है. सो इन दिस लाइन देयर इज द यूज ऑफ enjambment. नेक्स्ट इज ओनोमोटोपोइया. ये क्या होता है? दिस इज अ पोएटिक डिवाइस इन विच द मीनिंग इज imparted, meaning is suggested through the sound. यहाँ पे snarling word से हमें इसकी मीनिंग समझ में आ रही है कि जब भी टाइगर दहाड़ता है, रोड करता है, स्नाल करता है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? हमारी यहाँ को क्या कि इमेज आ रही है जब टाइगर लोगों को डराता है.
तो यहाँ पे हमें इस वर्ड से ही इसकी मीनिंग समझ में आ जाती है। नेक्स्ट इज कॉन्सोनेंट्स। As I told you that when there is repetition of the consonant sound, then there is the device of consonant. As we can see, fangs, his claws, यहाँ पे as जो sound है वो बार बार repeat हो रहा है। Assonance, so what is assonance? When there is the use of vowel sound, तो यहाँ पे o sound का और o sound का और I sound का use हो रहा है। As we can see, should, around, houses, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ओ साउंड का यूज़ हो रहा है। इसी तरह बेरिंग, हिज, वाइट, हिज, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, आई साउंड का रेपिटेशन हो रहा है। नाउ लेट्स सी स्टैंजा 4। इन स्टैंजा 4 द राइम स्कीम इज ABCB। एज वी कैन सी बार्स वर्ड इज राइमिंग टू विस्टर्स, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं RS यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो यहाँ पे सेम साउंड हो रहा है, बी और डी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सेल की बात की जाए तो यहाँ पे सेल क्या हो गया, ई, और केस हो गया सी। इसी तरह हम नेक्स्ट अगर डिवाइस देखें, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। एज द पोएट हैज यूज्ड ही एंड हिज वर्ड फॉर द टाइगर। एसोनेस, बिकॉज द पोएट हैज repeated the vowel sound, there is repetition of vowel sound in he, locked, concrete, cell. in the first line as we can see, यहाँ पे हम देख रहे हैं ई साउंड का बार बार रेपिटेशन हो रहा है। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, बिहाइंड पार्स, तो यहाँ पे बी साउंड का रेपिटेशन हो रहा है, बी कॉन्सोनेंट साउंड जो उसका रेपिटेशन हो रहा है। तो एलिट्रेशन क्या होता है, व्हेन देयर इज द रेपिटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स। नेक्स्ट इज कॉन्सोनेंट, so as we can see there is the repetition of consonant sound in the words his, strength and bar। तो यहाँ पे his, strength, behind, bars में हम क्या देखते हैं, s जो sound है वो repeat हो रहा है। so this was all about stanza 4। now let's see last stanza, that is stanza 5। in stanza 5 also rhyme scheme is ABCB। cars word is rhyming to stars, so the sound will be B। नाइट वर्ड में ए साउंड हो जाएगा और आइज में सी हो जाएगा। तो इस तरह राइम स्कीम हो गई ABCB। नेक्स्ट इज एंजाममेंट, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, एंड वर्ड से स्टार्स वर्ड के बीच में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो ये सेंटेंस नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एंजाममेंट डिवाइस का यूज हुआ है। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन, सो एलिट्रेशन कहाँ पे यूज हुआ है, He hears the last voice at night, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं H जो है हा साउंड बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है। एंड द लास्ट डिवाइस इज एसोनेंस, एज वी कैन सी इन द थर्ड लाइन, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है, वॉवेल साउंड का रेपिटेशन, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं विथ हिज ब्रिलियंट, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, आई साउंड का रेपिटेशन हो रहा है, तो ये क्या हो गया, एसोनेंस। So this was all about the poetic devices that are used in the poem. If you really like the video, please like and share with all your friends. और जो भी नए व्यूवर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस और भी मिलते रहें। So thank you all for the watching the video. Please share with the friends. Thank you all.